हेलो एवरीवन वेलकम टू वॉइस ऑफ सो डेली करंट अफेयर डिस्कशन आज हम देखा 16th ऑफ अप्रैल तो 16th अप्रैल करंट अफेयर को जदि हमें डिस्कस करबा तो किसी इंपोर्टेंट करंट अफेयर जदि हमें फास्ट डिस्कस करबा ओब्वियसली दैट इज एटी तुम देखि परबो बाल्टीमोर एंड जदि हमें देखिबा साधारणतः यूपीएससी ओपीएससी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी आजिकली मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत पचारुची this Baltimore is in what I would say close to New York. ये तुम जो न्यूयॉर्क पाखरे अछि ओके एटा टिके मन रखो एंड दिस इज क्लोज टू न्यूयॉर्क दैट मीन्स यूएस रे कारण तुमको एमती क्वेश्चन पचार पर के बाल्टीमोर कोठी अछि को ओके दे माइट आस्क यू के ऑन व्हाट रिवर तो एमती तुमको डिफरेंट क्वेश्चन से पचारि पारे so that is why you have to remember that area that is Chesapeake Bay. So that one is what Chesapeake Bay. ये कोठी अछि तमरो Chesapeake Bay. Chesapeake Bay and it's a river. Obviously ध्यान से देखिबो it's a Chesapeake Bay already थरे पचार सारी ची UPSC Chesapeake Bay and a small river is there. तो से river ऊपर अछि that is the Baltimore River भी ताको कहंती एंड सो दैट बाकी मुआको तुमको मैपिंग रे मते डिस्कस करबे मैरीलैंड एरिया भी कहते दिस एरिया आल्सो कॉल्ड एज द मैरीलैंड ओके आको मध्य कोन को आजे मैरीलैंड ओके ध्यान से मन को इट्स ए मैरीलैंड बाल्टीमोर यूएसए सेसापिक बे एंड क्लोज टू द वाशिंगटन डीसी okay so that is the news from here then Delmarva Peninsula here is another peninsula which is Delmarva Peninsula so that I will discuss in the mapping section world mapping section रे मुझे को discuss कर देबी the mapping series for the what prelims रे मुझे को discuss कर देबी don't worry for that तो बाल्टीमोर ऊपर में डिस्कस करके सिसापिक पे ऑलरेडी पचार से मुझे तुमको कहली दैट वुड बी द पार्ट ऑफ योर मैपिंग नाउ जदि हमें डिस्कस करें ऑब्वियसली द पॉलिटिकल न्यूज आई विल डेफिनेटली अवॉइड टू डू दैट वन ओके सो नाउ कम्स टू द important parts को आसीबा now we will definitely comes to the editorial part को हमें डायरेक्ट आसीबा ना एडिटोरियल पार्ट जदि हमें डिस्कस करो सब इंपोर्टेंट एडिटोरियल पार्ट जदि वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स ना द वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स देयर इज नाउ ए न्यूज दैट ऑब्वियसली जानछो कि ईरान एंड इजराइल दे आर नाउ हेडिंग फॉर द वॉर now war has already begun you may say like the present matlab at the present time if we see the tension between the Israel and Iran बहुत तियाम के बा भयंकर टेंशन रे पहुंची सिचुएशन ना ये सिचुएशन वर्तमान तमने सुनी थो कि मोर देन 300 मिसाइल्स एंड द ड्रोन्स वेर अटैक्ड ऑन इजराइल बाय द ईरान देन कौन पे दैट मीन्स हम आपको एबे टिके देखिबा ईरान एंड इजराइल इश्यूज को पैलेस्टाइन इश्यूज को सेतरे हमें देखिबा दैट मीन्स दैट इज द गाजा इश्यू ना एबे टिके हमें देखिबा वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स रे कौन होउची तो ऑब्वियसली जेतरा हमें वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स कथा डिस्कस करू तो हमको बैकग्राउंड नहीं कि डिस्कस करे को पड़िबो इट वाज लास्ट ईयर अक्टोबर 7 ना लास्ट ईयर अक्टोबर 7 अर्थात जेतरा हमें कोचे 2023 ना 2023 रो अक्टोबर 7 रे इजराइल्स दे वर सेलिब्रेटिंग सम सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल जो फेस्टिवल रे अटैक करथिले हमास फ्रॉम कोठी हम कहबा गाजारू कोठ में ना हमास माने अटैक करिकी किछि लोगों को हॉस्टाइल्स करिकी नैकी गले बंदी करिकी नैकी गले जो थरे कि इजराइल खपा ही जेथिला कहा पर गाजा ऊपर बिकॉज गाजा रो जो मिलिटेंट ग्रुप्स जाके हम कहूचे हमास बैक्ड बाय हुम ईरान हमास को किए सपोर्ट करे ईरान ना तुमको ईरान का ही सपोर्ट करूँ बिकॉज ऑफ सिया मुस्लिम बिकॉज ऑफ व्हाट सिया मुस्लिम तुमको बताले सिया एंड सुन्नी टू मुस्लिम्स आर अच्छे सिया एंड सुन्नी को सपोर्ट करे साउदी एंड सिया को सपोर्ट करे ईरान सो वर्ल्ड ऑफ मुस्लिम डिवाइडेड इनटू टू हेड सिया ग्रुप लीड बाय ईरान एंड सुन्नी ग्रुप लीड बाय साउदी दैट इज वाई ई इशू ना बर्तमान जदि आम देखा तो ईरान कौन करे ईरान इज डूइंग प्रॉक्सी वार अर्थात कौन कि व्हाट इज प्रॉक्सी वार अर्थात निजे डायरेक्टली न लड़िकी
अलगा कहा द्वारा अटैक कराइबा जेमिति कि चाहे से हमास कथा नहीं जाओ चाहे से फतेह कथा नहीं जाओ हेजबोला कथा नहीं जाओ हुतीज कथा नहीं जाओ दिज आर द मिलिटेंट ग्रुप्स जहाँ द्वारा ईरान कौन करुच्ची निजर टार्गेट को अचीव करने चेष्टा करुच्ची तेणु करिकी सीरिया एंड लेबनान जदि आम देखा इज्राएल नॉर्दर्न बॉर्डर रे जो मैंने अच्छी एठी अच्छी किए हेजबुला जो मतलब ग्रुप अच्छी मिलिटेंट ग्रुप ताको हेल्प करुच्ची हमास तो ओबियसली तुम जानचो कोठी गाजा स्ट्रिप रे अच्छी तो ये एंड हुतीज कौटी अच्छी एमेन रे की अच्छी हुतीज तो ये पूरा मिडल ईस्ट रे जदि आम देखा तो ओके ये चली ना रिसेंटली कौन अच्छी कि ना जे इज्राएल कौन कला एयर स्ट्राइक करके 1 अप्रैल रे एयर स्ट्राइक्स कला कोठी डामास्कस सीरिया रो कैपिटल कौन पई कले ना सीरिया रे किछि ईरान द्वारा सपोर्टेड होथवा हेजबुला जो कमांडर्स माने बा हेजबुला जेहेतु फ्रिक्वेंटली नॉर्दर्न बॉर्डर को अटैक करथला सेति पई ए माने अटैक करिकी दैट इज अली खामेनी को मार देले अली खामेनी के द कमांडर फ्रॉम द ईरान बेस्ड ईरान सुप्रीम्स लीडर अली खमानो दैट मीन्स ओ सॉरी आपको टिके मते करेक्ट करते सॉरी तो याद रख कौन है कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड अच्छी तांकर इंपोर्टेंट पर्सन्स मान को मारदेले जो मैंने कि ईरान ता द्वारा कौन है कि ईरान रो जो सुप्रीम लीडर ये रागी गले अली खमानी जो से कहले इज्राएल उपर आम प्रतिशोध नबू आमर जो मिलिटेंट बा कमांडर्स माने मरी इज्राएल स्ट्राइक्स रे इन सीरिया we will take the revenge and that is why more than 300 what missiles and drones were attacked on Iran upare sorry Israel upare attack kara jaichi ना देख तार रेस्पन्स रे एजाए इज्राएल किसी अटैक करी नहीं जदि इज्राएल अटैक करिवो ताले हम कहबा फुल फ्लेज वार मतलब विल ब्रेक आउट इन व्हाट वेस्ट एशिया मतलब none of the country in the world they are what willing to have the full-fledged war. Even the USA, France, though they are extending support for the Israel. And India is also vocally said, that is the Ministry of External Affairs, that we are looking forward to find a solution not to have the full-fledged war. And the Israel also asked by the different world leaders not to attack the directly to the Irans, though the Iran has fired more than 300 missiles on the Palestine on the what Israel. देन जदि आम ये सिचुएशन को देखा ना कम्स टू द बैकग्राउंड्स को जब आम आसवा बर्तमान जो टेंशन आम देखुचे व्हाट ईरान एंड इजराइल वेदर दिस टेंशन वाज देयर ना जदि ये टेंशन आम 40 वर्ष पूर्व को जो आम फेरी जा सो बिफोर 1979 इजराइल एंड ईरान दे वर हैविंग प्रेटी गुड रिलेशंस बहुत बढ़िया रिलेशन थिला कौन पई थिला ना से टाइम रे जदि आम देखा मिडल ईस्ट जो दैट मीन्स भाव 1980 पूर्वर बहुत बढ़िया रेवोल्यूशन थिला सेते बेले ईरान रे रेवोल्यूशन होता ईरान रे जेते रेवोल्यूशन होता what that is the second the geopolitics even in the second half of the 20th century Iran's that means the Islam's ideology entered into the confrontation with the Saudi Arab so that means in the 1970s and the 80s in that what 10 years there was ideological conflicts between the Shia and Sunni. The Sunni group, obviously, it was headed by the Saudi, and the Shia group, it was headed by the Iran. So as they were going through the confrontation that times. So that times in that particular time, Iran and Israel were having pretty good relation. But somehow, as the Saudi was what close allies of the US, and it had to be it would have to be the close allies of the USA because USA somehow didn't like that times and till present don't like the Iran's due to its some activities. So that is why by default I would say, and it was also by obvious, it's having a like the pro-war there कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है भाई वैसी कंसेप्ट यहाँ पे भी अगर देख सकते हो कुछ ईरान का दैट मीन्स यहाँ का जो ऊपर आई वुड से the enemy that was USA suddenly found to be the and become the friend of what I say Arab, Saudi Arab. So that is why now till that there was no issue. Now obviously you might have a questions in the mind then if there is an attack by the Jews or the Israels and the Islamic people, particularly the Hamas and the
Palestinians, then why the Saudi is not coming to forward to defend the Gaza? Because Saudi is having a different ideology, so they would not come because they are supported by Shia ideology. Had it be the Sunni ideology in the Gaza, the situation would have different. The Saudi would definitely intervene into the war and intervene into the situations. Okay, so at present, Iran itself is a flag bearer of Islamic world in terms of the Shia. So hence they are coming forward to support the what I would say the Gaza strips. The Sunni, obviously, the Arab world that would definitely find itself in the headed by Saudi Arab, okay, and that to be the supporters by the Western countries, including the US and the allies country. So that is also there. Okay, first, hope you are getting my point. So that means here, if I say the proxy wars that was going on here in Syria, Hezbollah, Syria, surrogate, Lebanon का था नहीं जो आप मतलब यहाँ पे हम देखिए गाजा को बात कर लो देन आरफ तो यहाँ पे और एक चीज़ मैं इंसाइट देना चाहता हूँ कि जो हुतीज़ है ना why the Houthis are attacking in the Red Sea region, that is the Gulf of Aden, and I would say better to express myself like that is the what Strait of Bab el Mandeb. Why exactly suddenly Houthi becomes so much of aggressive there in the Gulf of Aden, Red Sea, in that region they're attacking, and what is their target? This is the what Levant regions. The Levant regions. Lastly, UPSC in the year what it was 2023. This question was asked by the UPSC. That is the Levant region, which represent that is the eastern coastal boundary of Mediterranean Sea. So this was also asked there. It was okay. So to be very precise, this question has already UPSC asked, and the article that I'm going through, UPSC has already asked 3 to 4 MCQ from these articles in the last 5 years to 6 years or the 10 years. So these articles, it's really pretty good articles that we are going through right now. Like the Eastern Levant region. The Levant region means what? Those areas sharing the borders with what I would say the Mediterranean region. These are called the Levant region. Okay, and the proxy war, they may ask you where is the Houthi exactly and how the Houthis is being sponsored, who exactly backing the Houthis, where is the Gaza, and whose are the areas that share the Gaza's boundary and the Syria's boundary. Once UPC asked about the Syria, whether it's having the coastal line with the Mediterranean Sea or not. Once UPC asked about the matching the terrorist groups with the regional area, that let's say we are talking about the Hezbollah, they are confined themselves in the Lebanon and Syria, backed by the Iran. So like that, they may ask you the different sort of questions from the different angle. Okay, like the Houthis, they are backed by the Irans and attacking those peoples are the enemy of Iran, like the US. I would say the led Western countries. They suddenly comes and attacking those areas, the gray areas, the areas having the interest of I would say Iran's, the areas that have causing the pain to the Shia Muslim section in the around the world. That is where the Houthis are coming here. So okay, done everyone. Now in the 1970s and the 80s, as the Saudi and Iran, they were having the confrontation on the basis of the religion. Iran was forced to acquire the some sort of missiles from the Korea, from the China, from the Russia. मतलब जिसके लिए उनको भी बहुत सारे सैंक्शन फेस करना पड़ रहा था उस समय, लाइक द हच Qasim, that is having the what 1400 kilometers range, that is the what. Then again I would have the other missiles like Khaybar. These are the what missiles they are already having developed during the tension time. Okay, so the capabilities and the armed drones have been extensively employed in the Ukraine as well. So one thing अगर यहाँ पे हम देखें कि जो ये ईरान है ना, इन्होंने बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह एक्वायर करके रखे हैं ड्यूरिंग द टेंशन सीजन. अब सबको भी पता होगा कि बहुत सारे सैंक्शंस, इट वाज द मेनी सैंक्शंस दैट वेर implied or that was imposed, I would say better to say, imposed on the Irans to restrict to acquire the nuclear arsenal, the nuclear weapons that may cause the catastrophes to the world. That was also the obvious targets of USA. Now the Israel has continuously targets the Hezbollah and the northern border of Syria and the Lebanon.
So that is why now the author is saying, that is the what I would say the General Syed Atta from the what now he is the mayor of uh, Srinagar based, the foreign commander, and particularly now the chancellor, sorry, the University of Kashmir. So इनका कहना है कि देखो, अगर इज़राइल अटैक नहीं करता सीरिया के ऊपर जहाँ पे ईरान का जो कमांडर मर गया ना, तो ये ईरान आज भी अटैक नहीं करते इसराइल के ऊपर, जो 300 से ज़्यादा, जो मोर देन 300 मिसाइल्स एंड द ड्रोन्स which were attacked intentionally because their commandos were died. They died in the Israel strikes there in Syria and Lebanon border region. So they were having some sort of the thought that they would take the revenge of that particular strike, and that is why the situation has escalated into this present time or the present situation. That is the ballistic missiles. Many peoples are also having the ballistic missiles as well. So यहाँ पे अगर देखेंगे ऑपरेशन माइटार सुलेमानी, so these are also some of the operation going on. तो कहना ये है कि जो अगर ईरान नहीं अटैक, मतलब इजराइल नहीं अटैक करता तो ईरान नहीं आते. तो मतलब आई वुड से ऑन द कंक्लूजन पार्ट, दिस वार डज नॉट हैव एनी एंड. Let's hope that the war may not or must not comes to the full-fledged war, and it must stabilize and must calm down fast as early as possible. Otherwise, that will have the very wide repercussions of the worldwide inflation will be there, and the people will suffer. And obviously, I talked about that only the rich section will get benefit and the poor would be become the poor. Okay, that would be there. So this is all from these articles. It was a lengthy and the healthy ones. Now comes to this one. सो ये वाला जो आर्टिकल्स है ना, ये कहता है कि जॉब क्रिएशन को, क्योंकि आपको सबको पता है द इलेक्शन सीजन द फीवर इज गोइंग ऑन. एज द इलेक्शन सीजन द फीवर इज गोइंग ऑन, द many political parties including the India blocks, they are continuously and vehemently proposing that they will finish the jobless ward, and they will try to provide the what maximum jobs to the youth, those who are at the present times what wandering here and there. So, but in the other side, BJP is not promising that one. BJP is saying we have done pretty good job and we are creating environment for the employment creations like the MSME sectors, all this. So there is a two different, I would say, what ideologies and the two different proposal is coming from the election campaigns in India for the job related messages. One is that the India section, they are saying we will what create the more jobs. BJP on the other side hand saying we will create that atmosphere to have the job, to boost the entrepreneurships. So don't worry for that. Okay, so that is all about this particular point. So that is all about the editorial discussion. We have done pretty good job, the pretty good discussion in the mornings itself. Okay, but one thing I will discuss here, one thing that is the what some Hindus is been what uh, ex, ex, exhorts there. So Hindus को जो मतलब म्यांमार में जो हिंदूज है ना, दे आर बिंग अप्रेस, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रहा है. तो लगभग 1600 हिंदूज हेल्ड हॉस्टेज इन द म्यांमार स्टेट. तो म्यांमार का जो मिलिटेंट है ना, जैसे कि रोहिंग्या आर्मी, तो ये दैट इज व्हाट आरकान रोहिंग्या आर्मी, दे आर अटैकिंग हिंदू एंड द अदर माइनॉरिटीज लाइक द बुद्धिस्ट. इन लोग को अटैक कर रहा है. ये सारे क्या है, मुस्लिम्स, दिस मुस्लिम मिलिटेंट. तो ये अटैक कर रहा है किसको, हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड अदर रिलीजन माइनॉरिटीज को अटैक कर रहा है, जो कि यहाँ पे कॉज ऑफ कंसर्न है, बिकॉज दैट विल हैव मोर माइग्रेशन इनटू द इंडियन साइड. सो ये वाला हमने तो देख लिया, बिल्कुल देख लिया कि ये हमारा जो था आज का जो एडिटोरियल डिस्कशन था. एंड होप द पीपल हियर इज द इमेज, यू कैन सी द हाउ द पीपल्स आर getting the sand and preparing preparing for the salt. So this is all about the the editorial and the today's news discussion. Those papers which I have left, I will definitely cover those papers. Don't worry for that, but have mix and make it sure that you are sharing and commenting this video
because much you share, the information will definitely reach to the many more people, and they will also get the benefit same as you are getting. Thank you everyone. Have a good day to all.